इसरो का साइंटिस्ट की डेथ हो गई, UR राव, और एक और इंडियन साइंटिस्ट की डेथ हुई है। नहीं नहीं, तो ऐसे कुछ नहीं, ये नहीं लिखा कुछ। इसरो का साइंटिस्ट 85 साल का था। दूसरा यशपाल प्रोफेसर साइंटिस्ट डाइड 90 साल का था। वो लिखा कि पॉलिटिशियन बनता तो सब चिल्लाते, लेकिन ये साइंटिस्ट बने कोई रो नहीं रहा। नहीं ये नहीं लिखा ना, किससे मरे ये नहीं लिखा, ये नहीं किससे मरे, ये तो मुझे पहले ही बता रहे। आवाज ये कोई ज्यादा आवाज क्या गाँव सारा बिछड़ा वैसे चाहिए पर लगा आज पर सारा this is the rest बात ये 4 December हेलो 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 हेलो
hello, 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 hello. हाँ ठीक है काफ़ी ये तो पता चलेगा पत्थर पे ये नहीं ऐसे रखा इतना आगे करो थोड़ा इसको आगे तार छोटी है ना टेबल पीछे Connected to OnePlus 3G. थोड़ा घसी या फिर ये गिर जाएगा तार छोटी है थोड़ा अपनी तरफ टेबल कर लो थोड़ा कर लो टेबल पे पानी चलो evening chanting page 14 सो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो स्वाक्खतो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो यस्य भगवतो सावक संगो तमयं भगवन्तं सधम्मं ससङ्गम् इमे हि साकारे हि यथा आरोपिते हि अभिपूजयामा साधुनो भन्ते भगवा शुचिरपरिनिभृतोऽपि पश्चिमा जनतानुकम्पमानसा इमे सकारे दुगतपनाका भूते पटिगणातु अम्हाकं दीघ्रतं हिताय सुखाय
अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादे स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि हन्दमयं बुद्धस्य भगवतो पुंभभागनमकारं करोमसि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स जोर में मस्त शुरुआत मस्त थोड़ा जोर बीट नहीं आवाज हन्दमयं बुद्धानुसतिनयं करोमसि तं कूपन भगवन्तं एवं कल्याणो कीर्तिसन्तो अभुगतो इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्मसार सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति हन्दमयं बुद्धाभिगीतिं करोमसि बुद्धवारहन्तवरतादिगुणा वियुतो योद्धाभिज्ञानकरुणाहि समागततो मोदेशियो सुजनतं कमलं वसुरो वन्दाम्यहं तमर्णं शिरसा जिनेन्द्रम् बुद्धो यो सर्वपाणिनं शरणं खेममुत्तमं पठमानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणं बुद्धस्सस्मि दासो वा बुद्धो मे सामिकेश्वरो बुद्धस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि वन्दस्येव सुबोधितं नास्ति मे शरणं अन्यं मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन वड्डेयं सत्तु शासने बुद्धं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पशुतम् इदा सब्बेऽपि अन्तरायामि माहेषुं तस्य तेजसा कायेन वाचा वाचित्सा बुद्धेकं प्रकटमय बुद्धौ पटिकनाथोच्चेत कालान्तरे संवरितं भवते हन्दमयं धम्मानुसतिनयं करोमसि स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनयिको पश्चत्तं वेदितव्यो विඤ्ඤोहीति हन्दमयं धम्माभिगीतिं करोमसि स्वाखातो
गुणयोगवसेन सेयो यो मार्गपाकपर्यतिविमोक्षभेदो धम्मोकुलोकपटन तदधारि वन्दाम्यहं तमरन् शरधम्ममेतं धम्मो यो सर्वपाणिनं शरणं खेममुत्तमं द्वितीयानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणं धम्मस्सस्मि दासो धम्मो मे सामि किस्सरो धम्मस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि धम्मस्यैव सुधम्मतं नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन वड्डेयं सत्तु शासने वन्दमानेनायं पुण्यं पशुतं इदा सर्वेऽपि अन्तराय माहेशुं तस्य तेजसा कायेन वाचा धम्मेको कम्मं पक्रमे धम्मो पडिगनाथो अच्यन्तं कालान्तरे संवरितं मतं हान्यमयं संघानुसतिनयं करोमसि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुष युगा अट्ठ पुरुष पुंगला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकसाति हान्यमयं संगाभिगीतिं करोमसि सदा मजो सुपटिपत्ति गुणादियुतो यो अट्ठविदो आर्यपुङ्गलसङ्गसेठो शीलादिधम्मपवरासय चित्तो वन्दाम्यहं तमर्यानगणं सुशुद्धं संघो यो सर्वपाणिनं शरणं खेममुत्तमं ततीयानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणं संघस्सस्मि दासो संघो मे सामि किस्सरो संघस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि संघस्सोपटिपन्नतं नास्ति मे शरणं अन्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन वड्डेयं सत्तु शासने संगं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पशुतं हिदा सब्बेऽपि अन्तरायामि माहेशुं तस्य तेजसा
आयन वाचयावाचित सब संगे को कम्मम पगडमयाय संगो पटिगनाथ वचयंत कालांतरे संवरितम असंख्य. We'll now chant Mangal Sutta in Hindi. पेज 36 मंगल सूत्र. आइए हम उत्तम मंगल की गाथाओं का पाठ करें. ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती के जेतवन उद्यान में अनाथ पिंडक के द्वारा बनाए गए विहार में रह रहे थे. उस समय कोई एक दिव्य कांतिमान देवता देर रात संपूर्ण जेतवन को आलोकित कर जहाँ भगवान थे वहाँ उनके समीप गया. पास जाकर भगवान का अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया. एक ओर खड़े हो उस देवता ने गाथा में भगवान से कहा. कल्याण की आकांक्षा करते हुए बहुत से देव एवं मनुष्य मंगल धर्मों के बारे में विचार करते रहे हैं. कृपया आप ही बताएं कि उत्तम मंगल धर्म क्या है. भगवान ने जवाब दिया, मूर्खों की संगत न करना, ज्ञानियों की संगति करना, पूजनीयों लोगों की पूजा करना, यह उत्तम मंगल है. उपयुक्त निवास, पूर्व जन्मों का संचित पुण्य, अपने को सम्यक रूप से समाहित करना, यह उत्तम मंगल है. अपार विद्वता, शिल्प कौशल, नियमों में सुशिक्षित, सुभाषित वाणी, यह उत्तम मंगल है. माता पिता की सेवा, स्त्री पुत्र का पालन, व्याकुलता रहित कर्म, यह उत्तम मंगल है. दान, धर्ममय आचरण, रिश्तेदारों की सहायता, अनवर्जित कर्म, यह उत्तम मंगल है. संयमित, पाप कार्यों से विरति, मद्यपान न करना, हर परिस्थिति में सजग रहना, यह उत्तम मंगल है. सम्माननीयों को गौरव देना, विनीत, संतुष्ट तथा कृतज्ञ रहना, समय समय पर धर्म श्रवण, यह उत्तम मंगल है. सहनशीलता, आज्ञाकारिता, श्रमणों का दर्शन, समय समय पर धर्म चर्चा, यह उत्तम मंगल है. तप, ब्रह्मचर्य, आर्य सत्यों का दर्शन, निर्वाण का साक्षात्कार, यह उत्तम मंगल है. लोक धर्मों के स्पर्श से जिसका चित्त कंपित नहीं होता, शोक रहित, निर्मल, निर्भय रहता है, यह उत्तम मंगल है. इस तरह के कार्य करके जो सर्वत्र अपराजित हो, सर्वत्र कल्याण की भागी होती है, उनका यही उत्तम मंगल है. We'll now listen to the question answer session with Lumpur Sumedu. The main theme there is mindfulness is the highest practice.
So after this evening's meeting, the monks, we all have to return to Ratanavan Monastery for the night. This is still the Pansa or the Vasa, the 3 months determined to stay, not leave the monastery more than 7 nights. So we'll go to Wat Pah Ratanavan after this meeting and come back early in the morning tomorrow. So if you notice that behind here, don't feel deserted. It's just part of monastic discipline. Don't take it personally. So we'll continue our questions and answers. Ajahn and Asoko can read the questions. So the first question isn't a written question, actually, it came in otherwise. It's a question from a group in India, Indian background. They're asking if they now practice mindfulness and meditation regularly. What about the gods and deities that they used to worship? Are they going to get upset, angry? So the mindfulness is the highest form of meditation. You can't get higher than that. Like devotional practices, bhakti practices, to various deities like Shiva or Vishnu, to God in Christianity, Jesus, Allah. These are names, various names for ultimate reality. They're given anthropomorphic forms. But what they really mean, because this is the best language can do, is to make them more available, more personal, to give them some kind of human quality, like even though they're deities, they're gods, they have the features of male or female human beings. And this is what religion does, but they're aiming at the same thing, at ultimate reality. Because ultimate reality is, in this terms, it's not anthropomorphic, is it? It's more kind of philosophical or lacking in, human qualities that we might feel we need to be connected to a higher force that's loving or compassionate, wise and good. It's all our intentions to seek ultimate reality or happiness. This is what we all want, every human being on the planet that's ever lived, and the present population included. And then different religions have different names, different ways of, like monotheistic religion, like Christianity, Judaism, Islam, tend to, create this sense of there's only one God and all the rest are heathen, they're not gods, they're demons and so forth. This is the view, holding to monotheistic view. It's a viewpoint. It's not ultimate reality. Or polytheism, or where you believe in many gods, like in Hinduism there are many deities. These deities aren't, they're forms to be devoted to, but the highest form of meditation is mindfulness, really. Because from mindfulness, you're actually realizing God, Shiva, the reality of that, rather than worshipping some imagined form or
or devoting yourself to an imagined deity. So this kind of practice is not is not like denial of God, or it's not atheistic. It's not a rejection of other gods. It's not about rejecting or taking a viewpoint, an absolute viewpoint that we're right, and if you don't agree with us, you're wrong. But you notice it's open attentiveness, investigation, so that you're being empowered through this kind of practice to investigate consciousness, which you know, this is the experience that we're all having all the time, is consciousness. And we live in we identify with the conditioned realm, with the body, with the emotions, with the memories. We're conditioned to, culturally conditioned, socially conditioned. So we tend to bind ourselves to the conditioning process and to the assumptions that we make about ourselves being a limited mortal form. So in this Buddhist context, the Buddha was not denying anything. It's not atheistic. Because atheism, saying there aren't any gods, there isn't any God, is a belief too. You believe there is God, only one God, or there are many gods, or there aren't any gods. It's about believing some kind of information or some assumption that you've acquired. It's not through investigation that you can make such a statement. So in Theravada Buddhism, you've got this Dhamma, Buddha Dhamma Sangha triad, which are more pointers than beliefs. It's not that there's some kind of Buddha, like a deity called Buddha in the universe, that we worship. It's awareness. So we use the mantra Bhutto, not as devotion to some kind of imagined Buddha force in the universe, but reminder to trust awareness, this knowing in the present. And then the Dhamma teachings that we have in Vipassana are all kind of pointers, directional signs, such as like the Satipatthana, the Kayanupassana, the body, Vedananupassana, the feeling, the sensitivities, Cittanupassana, the mental states, and Dhammanupassana, the Dhamma. Investigating, looking into, and realizing God, Shiva, Dhamma, whatever name you want to call it, as a reality of here and now. It's not some remote figure on Mount Kailash or some mystical force in the universe. It's consciousness. Is mindfulness the same as emptiness? Well, mindfulness it's aware of emptiness, aware of conditions. In itself, it's knowing. If you want to define mindfulness in its ultimate state, like consciousness its quality is knowing the present. It's like this. And that's why when
When I ask you if you're conscious, you say yes. You know, that's a knowing, direct knowing consciousness. Sometimes, the consciousness has all kinds of mental conditions because things come and go, arise and cease, moods change, emotions, thoughts, memories, according to other conditions. So just the change in the weather will bring a mood in, whether it's wet and cold and gloomy. That's in consciousness. And as we're aware of the conditions that we're conscious of, that we're aware of, is not only awareness of the external, but awareness of the mood, the feeling of gloom and doom, and when things are cold and dark and dreary. But awareness itself, consciousness never is dark and gloomy. It's like luminosity, and it doesn't change according to the mood or the state of your health or whether you're being successful or failure, or you're being admired and recognized and praised or blamed and rejected and despised. Consciousness never gets depressed or elated about praise, but knows elation is like this, knowing that feeling rejected and despised is like this. So that's why it is a refuge, because it's what you can trust. It isn't influenced by changes of the weather or the social system or what's happening in the family or the economy or the political problems of the present time. Like when we talk about emptiness, they recognize, because the average unawakened, unenlightened human being is caught up in the conditioned realm, just fumbling from one condition to the next. The silence and peace of consciousness, even though it exists in everyone, can be completely overlooked for the next, interesting or condition to grasp hold of. So like conditioning, the process of conditioning is continuously kind of feeding into our mind's consciousness, things duties to perform, views to hold, positions to take, things to fear and dread, conspiracy theories that people can imagine, all kinds of evil forces and plots. Whatever the future is about imagination. We can imagine all kinds of evil forces in the universe. Is the devil is there a permanent force of evil, like a satanic force that is latent or underlying things, ready to grab us in a weak moment? We can believe that. Sometimes life does seem like that. But evil is a condition, it is a sankhara. And awareness is aware of, a sankhara that you might define as evil, but we're not making it into a problem. We're recognizing that all sankharas are impermanent, not self. So, this is where Mara, this Pali word Mara or Maya, delusion, temptation, these kind of words,
when we're mindful, we're aware of these delusions, these mirages, these maras, because they're sankharas, they rise and cease. But what isn't a sankhara is your mindfulness, awareness, consciousness. The next question is regarding when one has realized the Dhamma, does that afford us some sort of protection from dukkha? Or does one still have to deal with life on a personal level? Yeah, well, as long as the body's breathing, you have to deal with old age and the worldly dhammas, praise and blame, success and failure, good fortune and misfortune. But enlightenment means that, we're taking our refuges in awareness. So it doesn't mean that an enlightened person that lives in a state of kind of heavenly bliss and they don't experience anything but peace and bliss and happiness on the conditioned realm, because we still have to deal with the aging of the body, the family problems, social problems. But our relationship to them is free from delusion. So that, when Luang Por Chah became ill, last 10 years of his life, he was an invalid. But he wasn't deluded by it. It just, what happens to a physical body when they, strokes or heart attacks, that is part of the physical realm, the karma of these physical forms, old age, sickness, death. But the awareness is deathless, the amatta Dhamma. So when you really, you begin to really appreciate this kind of teaching, because you realize there's nothing to fear. It doesn't mean like enlightened human beings, you read about saints and enlightened masters who die from cancer or heart attacks or things. They don't always just die in full lotus posture, smiling. That's the image that we have. But we have to live with the vipaka karma of having been born on planet Earth, and the conditions that change, the planetary conditions, the climatic conditions, social conditions. But awareness then is our refuge, rather than hoping for the best and then dreading maybe the aging process, or fearing death. Things like this are done from the conditions of the mind. Ultimate reality is nothing to fear, deathlessness. But in terms of sankharas, they're all about beginning and ending, rising and ceasing, birth and death. So that's where this reflection and just observing the ending of a thought or the cessation of an emotion is a kind of death. An emotion of anger arises,
and then it ceases, that it died. That's what death is, the end of something, of a condition. And when something ends, it's, if you're patient and let anger cease, you recognize, you realize peacefulness. That's the nature. That's emptiness. Peace is empty. It's not a condition that has a quality other than peacefulness. And the next question is regarding the Four Noble Truths that they were described the other day by Lumpodun, the mind knowing the mind. What do you mean by the word mind? To clarify how I use these words, when I talk about the mind, M-I-N-D, because that's a generic word in common English parlance, so we use it for anything mental. It can mean consciousness or any emotion, mental states. So in trying to define, make clear how I'm using these words, I use the word mind for mental states, like emotions, thoughts, feelings, and consciousness I use for the awareness, mindfulness. So mental states, mind states arise in consciousness. They appear and disappear in consciousness. So consciousness, mind can't, in this use of the word mind, the mind can't know the mind. Like one condition can't know itself. Your personality, your created sense of yourself as a physical body can't know that, what it's doing. Mental states, emotions, love and hate, like and dislike, they don't know themselves. That's why when we grasp love or hate, we become like that. We become someone who's in love or obsessed with somebody else, or angry and revengeful, because we're grasping these mind states, conditions that arise and cease. But when we're aware, mindful or conscious of these mental states, then we're looking at them from the Puto Tamo position. They are sankharas. All sankharas are impermanent. This kind of refrain, a way of recognizing, discerning, mental states that are come and go, and the supreme consciousness, universal consciousness that we actually are, rather than this mortal body, mortal form, these kind of emotions and habits and personalities that we think we are. These are what we believe we are and what we think we are, but these are mental states. They're all sankharas. So when I use the word mind, it's talking about mental conditioning, emotions, feelings, memories, imagination, creativity, imagining all kinds of things, or wanting, not wanting, loving, hating, and so forth. These are mind states. Awareness, consciousness, mindfulness is the deathless refuge, Puto Tamo Sankho.
You use the words, the Pali words, nirodha and vinyan. Could you explain them, please? Like the word Pali word means cessation, nirodha. And it's generally, the third noble truth is this word is used for the insight into the cessation of suffering. So the first noble truth, there is suffering, is a Bhariyati statement. It's what you read in the scriptures. So when you read about the Buddha's first sermon, he said there is suffering, and then to understand suffering and have the insight, so you know suffering not from just intellectual rationalizing it, but by understanding it. You observe, you're the observer of suffering, you're the knower of the First Noble Truth. It's like this. So that's the statement of using something so common, so ordinary as suffering. Dukkha is the most ordinary human experience, from time past, from Adam and Eve, up to the present moment, whatever culture, civilization you identify with, whatever age, dukkha is the common bond of all creative beings. So in this way, we say brothers and sisters in suffering. This kind of gives you this sense of a compassion for all sentient beings. When you know that the dukkha is a common to all of us. It's not just my suffering that matters and all the rest don't count. That's self-centered, that's very selfish, narcissistic ego trip. My suffering's important, but the rest, you read the news, hear the news, and it's about, bombing people, collateral damage, where innocent people are just wiped out because they happen to be in the wrong place, and it doesn't matter, they're not important. But I'm important, I'm the fighter, the one that's bombing people, but my life is important, but theirs isn't. This is because we see things from a very, my life is important, but nobody else's life is so important. And when we talk about selfishness or egotism, that's how we tend to feel, me and my family, but the rest don't matter. And if they're different race, different culture, this collateral damage is a kind of disgusting, cold-hearted way of defining what happens. It's it's so inhuman. You wipe out somebody's family and say, "Oh, it's collateral damage. It's war." But if you reflect in terms of Dhamma, that we all have this dukkha, this suffering. It's the same for all of us. It's not more or less for Thais or for Indians or Europeans or Africans. It's the same for all of us. So it's a noble truth to be understood, not a nasty fact of life that we blame on other things, other conditions. And we're looking here, so you point to our mind, to our heart area, where the feeling area. Because
The rational thought, as I've said before, we can create perfect images, symbols of perfection with thinking, but our life is about feeling, emotions. This is a feeling realm, this is a sense realm. And so we're caught in this sensitive form. Human body is totally sensitive form in a vast universe. So from the day you're born, you're subject to, seeing, hearing, smelling, tasting, touching, sensitivity, heat and cold, hunger, fatigue, physical pain, pleasure, and so forth, from birth until death of the body. That's the way it is. So the dukkha is the first noble truth to be understood. And then the insight, this is on the heart level, not on the intellectual one. We understand it. We can define dukkha or suffering, just read the definition in the Pali dictionary of that. But that's not understanding suffering. Understanding suffering is observing. Bhutto, knowing it's like this, to feel angry or to feel lonely, to feel worry, to feel fear. And then the second noble truth, the causes of suffering, has an origin. Third noble truth is cessation of suffering. So the first two noble truths is this investigation of dukkha, which is sankharas, what we see, hear, smell, taste, touch, think, feel. And the objects that we see and hear and smell and taste and touch. And thought itself, emotions. So by grasping out of ignorance of Dhamma, we identify, you can say, identify or grasping sankharas. We identify with the human body, or we grasp the human body out of ignorance. That's what we limit ourselves to. So we're bound to suffer if this is what we are. Our world is limited to the physical structure, conditions, and problems of a human body. Growing up, getting old, getting sick, and dying. Is that what we identify with? Is that what we really are? But if you notice, we're aware of growing old. Awareness doesn't grow old. You're aware of when you have a cold, when you have the flu, when you're hungry, when you're sleepy. You're aware when you feel lonely and upset or depressed, or when you're happy, when you're ecstatic, when you're whatever you're feeling, if you're drunk or inebriated or consciousness never gets inebriated, never gets drunk, never gets lost in drug addiction, but mental states, physical states change according to what we consume or take into our bodies. So the cause of suffering is this ignorance of icca and the grasping of desires. We identify with our desires. Kamadana, bhavadana, vipodana. So by investigating, by looking into these, is to let go of them. So the insight in the second noble truth is letting go. But to have that insight, you have to
really grasp things to see the suffering of grasping. So it's not just about trying to get rid of everything. So an idea of you've got to let go of everything, that can be an ideal. You should let go of everything. And then try and do that, you can't really do it. But by investigating, clinging, grasping, identity with sankhara, this is like intuitive awareness. Just like I am this physical body, this is me, and I've in my practice over the years, this identity with the body, with the feelings, the mental states. But the awareness of them, this sense of me and mine, I see as a creation. It's not, mindfulness doesn't have any possessive conditions in it. Consciousness is pure, complete and whole, where mental states can be, you really get possessive, jealous, grasping, obsessed with fears, with desires, with conditions. And by observing that obsession, that concern, endless grasping, identity with sankharas, you have the insight that rather than getting rid of them, it's not about annihilation, just let go. This, in Thai, ploy one. Letting go is more like relaxing. Don't just spend your life holding, grasping. It's the life of tension and dukkha. If we don't understand this, we live in this state of tension and stress, where letting go is relaxing, not annihilating or destructive or in any way. And that leads to third noble truth, the cessation, the realization of nirodha, the absence of grasping. So nirodha is desirelessness, non-grasping, it's freedom, it's joyful happiness. So, in the Buddhist sense, suffering, by emphasizing suffering as a noble truth, and by understanding suffering, you realize your true nature is happiness. So instead of seeing that, as a gloom-doom scenario, and Buddhism is some kind of, when you're dead, you go to Nibbana, which is nothing, or, is it happiness, or is it a state of eternal bliss, or, you can imagine Nibbana, the word Nibbana as usually call it the highest happiness. Nirodha, Nibbana, these are, you can't define them, but you can realize them because they're reality, ultimate reality. So then the insight into Nirodha, to make that, then that's path knowledge. You have an insight into the path of non-suffering, the Fourth Noble Truth. So that's samadhi, right understanding, perfect understanding. It's beyond doubt. It's not just an intellectual understanding of Buddhism or Buddha Dhamma. It's not theoretical or philosophical or something, that you
imagine or believe in. It's through direct insight, through knowing. Like tasting honey, if you've never tasted honey, somebody comes up to you and says, have you ever had honey? And they say, no, what is it? And you explain, it's sweet, it's delicious. And then they give you the chemical formula for honey, tell you how it's made by bees, and tell you all the different brands of honey, and the best quality of honey, and the history of honey. But you still don't know what it tastes like. Oh, it's sweet and delicious. But you don't know really, until you actually taste it, what honey is. So Dhamma is like that, it's the taste of Dhamma. You can talk about Dhamma and describe it and what the Buddha said about it, what Buddhaghosa said about it, what the Arahants have said, what the great sages in China have said about the Dhamma, and on what Luang Por Man said about the Dhamma, Luang Por Cha. It's like, knowing all about honey without ever tasting it. So, like meditation, mindfulness meditation is tasting the honey, tasting the Dhamma. In fact, I think one of Luang Por Cha's books translated into English is called The Taste of the Dhamma. Another question is about effort in practice. Effort in practice. How does one avoid falling into bhava tanha, vibhava tanha in terms of desire to attain something in practice? Well, like in samatha meditation, you use effort and concentration and mindfulness. You have these 5 factors: satta, virya, sati, samadhi, panya. And mindfulness is the center point. Sati, so satta is faith, virya is effort, sati is mindfulness, samadhi is concentration, panya is wisdom. And so like saddha and panya, with mindfulness we balance effort with wisdom, saddha and panya, and virya and samadhi. So in these 5 factors, sati is the kind of central point. Virya and samadhi balance each other, and faith and wisdom balance each other. So it's about balance. And like, when you see a baby learning to walk, it's the effort it takes to find the balance. When an infant is learning to learn to walk, first they have to crawl. First they can't even crawl. And they start crawling, then they start pulling themselves up on the furniture, standing on 2 legs and then falling over. And then they learn to stand up, holding on to things, and then they take a couple of steps independently and fall down. They get up again. So eventually, the balance is realized. So that
walking becomes easy and natural, effortless. They don't fall down anymore. They know how to. It's intuitive, isn't it? If you say to a child, you've got two legs, walk. It's kind of logical. You've got two legs, just walk, do it. And they can't do that at first. So like being mindful, and say, just be mindful, that's enough, is true, that is enough. But also, in the beginning stages, just concentrating on the breath, there's 6 kind of efforts. But how you kind of learn how to use effort, too much effort, or not enough effort. If you use too much effort, then you're going to be overwhelmed. You're going to get a headache. You're going to feel stressed and rigid. So you see people concentrating, with their brows furrowed and their teeth grinding each other and holding themselves. It's like using so much effort to concentrate, and then you get a headache. And then you think you can't meditate. Because, what are you trying to get? What is the aim? Is effort is too much to concentrate. Effort and concentration balance each other. So it's intuitive, like knowing when you're balanced and when you're not. So like too much effort is, when you're lifting a heavy log onto a lorry, you have to use an enormous amount of effort to lift something heavy and put it into the back of a lorry. Well, you can't sustain that effort. You can't concentrate that effort for very long. But it's the kind of effort you need for situations such as that. If you think effortless, that samadhi is effortless, then you think you not to put any effort into anything, and then you just fall asleep. So this is where you have to trust yourself in learning, this sense of relaxed attention. Mindfulness is effortlessness. Concentration takes effort. And in the long run, effort is just relaxed attention, just this sense of awareness in the sense of open, relaxed state is samadhi of the Eightfold Path. But this is where, encouraging you to experiment, see what, when you're getting headaches or getting stressed is too much effort. If you remember in Wapapong, on the one prayer nights on the lunar nights, we had to sit up all night, and they call it one of the Tudanga, one of the ascetic practices that's allowed to Buddhist monks is Nesatik Vata, not lying down. So then, that's a real exercise in effort, to try to keep awake. We're very habituated to, feel sleepy at certain times, we're creatures of habit. So it gets about 10 o'clock at night and you're sitting there and you just feel so sleepy, and then you're straining to get rid of sleepiness. Tinamita, one of the kilesas.
You've read the scriptures about you've got to get rid of tinamita, sleepiness. So you're fighting it and forcing yourself. And you sneak behind your kuti and drink strong cups of coffee and then come back. One monk used to tie himself to one of the posts. You can do all kinds of things just to stay awake and think you've been keeping this Tudanga practice of not lying down. But it's the idea that you shouldn't sleep, that you've got to stay awake, you can't lie down, is how we interpret that particular ascetic practice. But in tinamita, or sleepiness, drowsiness, is a condition. It's a sankhara. So I found using awareness of sleepiness, I'd be aware of, around the eyes, or I'd try to observe in the physical body where I felt this sense of tinamita or sleepiness or dullness. Kind of keep my investigating abilities towards something that's actually happening, physically to me. Where before I did this, I tended to resist and fight it. Another monk in Amaravati used to put a book on his head, like balance a book on his head and sit there, and then in the middle of the night you hear the book crash on the floor. You go to the most extreme kind of efforts to try to stay awake and keep to this rule. So right effort is intuitive, it's balanced with concentration. And it's mindfulness that it's intuitive awareness that knows balance. When a child is learning to walk, you can, tell them how to walk. You've got two legs, you can walk, put your right foot forward, then your left, and tell them about how everybody can walk. And describe even maybe physiologically what's happening when your body is walking, and what good walking is, what good posture is. This is all, descriptions of walking, but you can't really walk until you learn, intuitively learn to balance. Balance isn't something rational that you can just read in a book and do it. It's learning to get the feeling for it, for imbalance. At first you have to be imbalanced, fall over. You notice how babies, they fall over and they pick themselves up right away. They don't think, I can't walk, I'm hopeless. They don't think, that's one of their good fortunes. And so, they fall over and they get up right away. And so that's, the mind of an infant. It's not reached the critical stage yet, or thinking, because they can't walk, that there's something wrong with them. They just keep at it till they learn. Same with meditation. Even though you make mistakes, you use too much effort or not enough effort, you learn from that. This is awareness. If you're too stressed
and tense and getting headaches, then you're trying too hard. If you're too relaxed and too kind of lethargic, then you just feel sleepy and fall asleep. So then finding the balance between effort and concentration is through awareness, sati. And then sattva and panya, faith and wisdom. Faith in this, is, in this sense, the English word faith for saddha isn't just blind belief, but a confidence, a trust in what you're doing. So it's not like, oftentimes in English the word faith means you're believing in something. That in a religion you have faith in God or Jesus, and faith in that is kind of accepting, something you've been told. But in the virtue of saddha is learning to trusting your awareness, learning to trust awareness. E sodavanta bamunjantu satang. Those who hear what I'm saying, trust this awareness. Because if you're out of balance, if you're stressed out, if you're too relaxed and falling asleep, there's this knowing. And then we tend to, see it in terms of personal. I can't meditate, I get a headache every time I try, or I just fall asleep, I have just dull states. And you interpret the experiences you're having in personal terms. So then it creates this sense of lack of trust. I can't do it, I don't have the barami, I'm not good enough. Or you tend to overestimate yourself. You think, you take pride in your concentration. I've got the jhanas, I've got psychic powers, I'm really good. That's the other extreme. But that's created sense of self with identity with success or identity with failure. So identity is a form of clinging, upadana. That in the second noble truth we see is the cause of suffering. So we get back to that, be willing to suffer and welcome suffering. It's like this, and see it as a noble truth rather than something you just want to get rid of and blame others for or blame yourself. संक्षेप में आपको
सारांश बताते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन का। पहला प्रश्न था कि हम ध्यान करते हैं तो कई जो डेटीज़ हैं वो नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे कि हम उनको उचित सत्कार नहीं देते। तो अजान ने बताया कि जो माइंडफुलनेस है, जो सती का हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। और ये डेटी जो है ये भी एक तरह से अल्टीमेट रियलिटी का मानवीकरण करने का क्या प्रयास किया गया विभिन्न धर्मों में। तो उसको हम उस सेंस में लें तो कोई उनमें विरोधाभास नहीं है। भगवान की शिक्षा में हम ऐसा नहीं कहते कि हम इनको नकार देते हैं डेटीज़ को, या कि कहते हैं कि इनको मानना एक भूल है। अलग अलग तरह के जो रिलीजन्स हैं उनकी अपनी मान्यता होगी, लेकिन भगवान की शिक्षा में ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि हम इन डेटीज़ को रिजेक्ट करें और तभी हम साधना कर पाएंगे। क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो जो सत्य जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सत्य ही हम सचमुच में अनुभव कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जो शिव जो है वो एक कॉन्शियसनेस का ही मानवीकरण करने का प्रयास है। तो अगर आप ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं तो आप उनकी स्तुति करने जैसा ही वो माना जाना चाहिए, तो उसमें कोई दोष नहीं है। दूसरा प्रश्न था कि माइंडफुलनेस क्या एम्प्टीनेस एक ही बात है? तो नुपुर ने बताया कि माइंडफुलनेस एक हमारी क्षमता है जानने की कि क्या हो रहा है, हम उसको जानते हैं। और वो जो जानने की क्षमता है, जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस नहीं होती, इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो ट्रस्टवर्दी है और वो उस पर हम शरण जा सकते हैं, रिफ्यूज है। एम्प्टीनेस जो है वो दूसरी, जो जब कोई कंडीशन अराइजिंग होती है, कोई चीज़ मन में आ जागती है, जब उसका निरोध हो जाता है तो जो शांति आती है, जो पीस आती है, वो कॉन्शियसनेस के अंदर जब कोई हलन चल ना हो तो वो एम्प्टीनेस को इंडिकेट करती है। और दुर्भाग्य से हम क्योंकि हम जो चीज़ों की अवेयरनेस होती है, उन चीज़ों में हम इतने उलझे रहते हैं कि जो सेसेशन है, जो निरोध है, हम उसकी ओर देखते नहीं, पीस की ओर देखते नहीं, तो हमें एम्प्टीनेस की बात समझ में नहीं आ पाती। तीसरा प्रश्न था कि क्या जो रियलाइजेशन हो जाता है, जो लिबरेट हो जाते हैं, क्या वो उनको सारे प्रकार से दुखों से छूट मुक्ति हो जाती है? तो उन्होंने बताया कि जो अरहंत भी होंगे, जो लिबरेटेड भी होंगे, उनको भी लोक धर्म से तो डील करना ही पड़ेगा। हानि लाभ, जय पराजय, प्रशंसा, अपयश, सुख दुख, ये सब तो सबके साथ आने वाला है। और शरीर का अपना धर्म है कि वो बूढ़ा भी होगा, बीमार भी होगा, जाएगा भी, तो ये सबके साथ होने वाला है। हाँ, फ़र्क ये पड़ता है कि क्योंकि एक अनलाइटेंड पुरुष अरहंत ने अपनी सारा रिफ्यूज उनकी अवेयरनेस पे है, तो ये सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अवेयरनेस जो है वो डेथलेस है। और अवेयरनेस के अंदर क्या आ रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, रोग आ रहा है, अब कड़वी बातें आ रही हैं या प्रिय बातें आ रही हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उदाहरण के लोग पर उन्होंने बताया कि लुंगपुर जीवन के 10 साल बीमार रहे स्ट्रोक से, तो वो कर्म विपाक था, बट इसका मतलब नहीं कि वो डिल्यूटेड हो गए थे, डिल्यूटेड नहीं थे। और इसी तरह से उन्होंने बताया कि कई और भी विभिन्न मतों के जो संत लोग रहे हैं, उनको काफ़ी कष्ट रहा है, कई लोग कैंसर से पीड़ित रहे, लेकिन तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जो लोक धर्म है उनका असर नहीं पड़ेगा। फिर लुंगपुर धुन के द्वारा बताए गए 4 आर्य सत्यों के बारे में बात था। उसमें कहा था माइंड नोइंग द माइंड। तो उन्होंने पूछा माइंड से क्या मतलब है, तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि माइंड जो है कॉमन, जैसे सामान्य जन भाषा में हम जो इस्तेमाल करते हैं मन के लिए करते हैं, लेकिन जैसे वो कह रहे हैं उसका मतलब मन की जो स्टेट्स हैं, जो चैतसिक हैं, जो इमोशन है, विचार हैं, फीलिंग है, राग है, द्वेष है, वो सब। और जो कॉन्शियसनेस है उसका मतलब अवेयरनेस, माइंडफुलनेस है। तो जो मेंटल स्टेट्स हैं वो अराइज होते हैं, वो कॉन्शियसनेस में अराइज होते हैं।
जो मेंटल स्टेट्स हैं कॉन्शियसनेस में अराइज होते हैं, और लेकिन वो कॉन्शियसनेस को असर नहीं डालते। जो मेंटल स्टेट्स है वो इम्परमानेंट है, संखार है। कॉन्शियसनेस जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है वो डेथलेस है, वो संखार नहीं है। मेंटल स्टेट्स अपने आप को खुद नहीं जान सकते, वो कॉन्शियसनेस ही उनको जान सकती है। 5वां सवाल था निरोध और विज्ञान के बारे में, तो उन्होंने निरोध का पूरा डिटेल में बताया कि किस तरह से प्रथम आर्य सत्य क्या है, दूसरा तीसरा आर्य सत्य क्या है। कि प्रथम आर्य सत्य के जो परियत्ति, पटिपत्ति, पटिवेदन जिससे हम सब परिचित हैं, उसके बारे में बताया उन्होंने कि दुख आर्य सत्य है, फिर दुख का जो कारण है उसका आर्य सत्य है, और उसके दुख के कारण को जो हम त्याग देते हैं, जो उसको तो जो डिज़ायर है, जो तृष्णा है, उसको त्यागने के बाद जो उसकी निरोध हो जाता है, वो उसको निरोध या सेसेशन कहते हैं। तो निरोध का मतलब है तृष्णाओं से मुक्ति, किसी भी चीज़ को पकड़ने की से मुक्ति, वो निरोध का होता है। और उसका निरोध का स्वाद जो है वो शांति का होगा, क्योंकि जो मन में बेचैनी होती है वो उनके राग द्वेष और चैतसिक जागते हैं उनके कारण होती है। फिर 6वां सवाल था एफर्ट के बारे में, कि हमको प्रैक्टिस में एफर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए। संक्षेप में आपने समझाया कि उसके लिए बैलेंस करना चाहिए। जो 5 इंद्रियां हैं, श्रद्धा, वीर्य, सति, समाधि, पन्या, तो श्रद्धा को पन्या बैलेंस करती है और वीर्य को समाधि बैलेंस करता है। तो अगर हम जिस तरह से उन्होंने उदाहरण बहुत अच्छा दिया बच्चे का, इन्फेंट का, जो बालक है चलना सीख रहा है, तो उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, पहले वो क्रॉल करता है, फिर खड़ा होता है, फिर सहारा लेके खड़ा होता है, फिर उठता है तो गिरता है, उठता है गिरता है, तो वो बार बार एफर्ट करता रहता है और उसको बैलेंस करना पड़ता है, अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है। आप उसको ये कहें कि देखो तुम्हारी 2 टांगें हैं, सब चल रहे हैं, तुम भी चलो, तो उससे काम नहीं चलेगा उसको। और वो जो बैलेंसिंग है वो बुद्धि की बात नहीं है, इंट्यूशन की बात है। उसको शरीर को बैलेंस करना सीखना पड़ता है एफर्ट से, बार बार गिर गिर के। तो इसी तरह से साधना में भी हमको बैलेंस करके रखना चाहिए एफर्ट और समाधि को। बहुत ज़्यादा एफर्ट करेंगे तो सिर दर्द हो जाएगा, बेचैनी होगी, और हल्का एफर्ट करेंगे तो नींद आती रहेगी, सोते रहेंगे। तो एक्सपेरिमेंट करके बार बार, जैसे छोटा बच्चा बार बार अपने आप को बैलेंस करना सीखता है, उसी तरह हमें भी साधना करते हुए बैलेंस करना सीखना चाहिए कि किस तरह से हम एफर्ट को और समाधि को बैलेंस करें, ताकि हमारी साधना जो है बराबर से ठीक से चल पाए। और वो कहते हैं ये सब जो है आपको अपने आप मालूम पड़ता है। जो सती है वो उसका काम हमको बताने का काम करती है। जब आप स्ट्रेस आउट हो जाते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है, परेशानी हो रही है। जब नींद आ रही है तो भी मालूम पड़ता है कि नींद आ रही है। तो उन क्यूज़ को, उन इशारों को समझते हुए हमको उचित कार्यक्रम, उचित डायरेक्शन में जाना चाहिए। एफर्ट ज़्यादा हो रहा हो तो कम करना चाहिए, कम हो रहा हो तो ज़्यादा करना चाहिए। ये हमको अपने आप करना पड़ेगा, कोई और बता नहीं सकता कि कितना एफर्ट की ज़रूरत है। हाँ, एफर्ट की ज़रूरत ज़रूर होगी। जो समाधि का अभ्यास है उसमें ख़ास तौर पे एफर्ट की ज़रूरत होगी। जो सती है वो एफर्टलेस है। जितना एफर्टलेस होंगे उतना वो स्पष्टता से हमको मालूम पड़ पाएगा। तो अब हम संघानुसति का अभ्यास करते हैं संक्षेप से। हम लोग रोज़ ही चांट करते हैं संघानुसति को, तो पहले एक बार चांट कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा विवरण मैं उनका दे दूंगा। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सामीज्ञाय पटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सामीचि पटिपन्नो भगवतो सावक संघो, यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्टपुरुष पुङ्गला, एषु भगवतो पावक संघो, आहुनेयो पाहुने दक्षिणेयो अंजलि करणीयो,
अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकसा। तो पहले तो बताते हैं कि जो किस तरह से संघ, श्रावक संघ जो है भगवान के, किस श्रद्धा से, किस समझदारी से तो सुपटी मार्ग पे चल रहे हैं। सुपटिपन्नो मतलब ठीक प्रकार से चल रहे हैं। उजुपटिपन्नो सीधे मार्ग पे चल रहे हैं, इधर उधर नहीं जा रहे हैं। न्याय पटिपन्नो प्रज्ञापूर्वक जा रहे हैं, समझदारी के साथ मार्ग पे चल रहे हैं, यंत्रवत काम नहीं कर रहे हैं। और सामीची पटिपन्नो भली भांति काम कर रहे हैं, ये नहीं कभी थोड़ा किया फिर छोड़ दिया, फिर छोड़ा के फिर किया। तो ये इस तरह से संघ के गुण बताए जाते हैं, ये हमारे को प्रेरणा देने के लिए और इसको रिकलेक्शन के लिए हम कर सकते हैं। जैसे जैसे जब तक मैं थाईलैंड के संघ से नहीं मिला था तब तक तो ये होता था कि ग्रेट डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा की जो किताबें पढ़ी थी, स्टोरीज पढ़ी हैं भगवान ने के श्रावक संघ श्रावकों की, महान श्रावकों की, वेनरेबल सारिपुत्ता, मोगलाना, महाकश्यपा, आनंदा, अनिरुद्धा और जो दूसरे उनके मुख्य शिष्य रहे हैं, उनके बारे में जब पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि किस तरह से ठीक तरह से मार्ग पर चला जाता है, किस तरह से न्यायपूर्वक चला जाता है, किस तरह से भली भांति चला जाता है, किस तरह से सीधे चला जाता है, न बाएं जाते हैं न दाएं जाते। तो उनके जो दृष्टांत कई जगह आते हैं वो उनको याद करते हैं जब संज्ञानुसति में, तो मन में प्रसन्नता जागती है, कॉन्फिडेंस जागता है, श्रद्धा जागती है। तो कई दृष्टांत ऐसे हैं, जैसे सारिपुत्र के साधना के दृष्टांत कि किस तरह से वो घनी साधना की सिर्फ एक गाथा सुन के आशा जी की, वेनरेबल आशा जी की, वो श्रोतापन हो गए और फिर साधना करते रहे और 15 दिन उनको लगे मुक्त होने में और कंटिन्यूसली साधना करते रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो निरंतर बैठ के ही साधना करते रहे। उनका जो मुक्ति का जो क्षण था वो तब था जब वो भगवान को पंखा झेल रहे थे और भगवान किसी और को धर्म सिखा रहे थे। भगवान ने जो दूसरे को धर्म सिखाया वो बात उसको कितनी समझ आई वो नहीं मालूम, लेकिन सारे पुत्रों को जो उसको सुनते ही तुरंत सारी जो रेजिडुअल बचे खुशे संयोजन थे वो सब निकल गए और वो उस अवस्था में ही मुक्त हो गए। तो बताते हैं कि किस तरह से कंटिन्यूअसली और ज्ञानपूर्वक उन्होंने साधना करते हैं। महामोगलान का बताते हैं 7 दिन तक लगे रहे, बीच बीच में उनको नींद सी आती रहती थी तो भगवान उनको बता देते मोगलाना जाग जाओ, और फिर उनको तरीके बताया कि किस तरह से नींद से हटना है। उनकी इतनी समाधि पुष्ट थी फिर कि भी ऐसा होता रहा और वो लगे रहे 7 दिन तक कंटिन्यूसली जब तक कि मुक्त ना हो गए। तो इस तरह से कई दृष्टांत आते हैं। एक सारे बुद्ध के नेफ्यू का आता है जो 7 साल का था, वो उनके साथ जा रहा है, पिंडपात पे उनके साथ चलता है तो रास्ते में देखते हैं खेत हैं, खेत में वो पानी की जगह बनाई हुई हैं। तो कहते हैं ये कौन कैसे कर रखा है पानी, देखो कैसे डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं पानी की। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो एक कोई तीर बना रहा होता है तो सारे बुद्ध उसको बताते हैं देखो कोई तो है वो पानी की दिशा को अपने वश में करता है, कोई तीर मोड़ के लकड़ी को वश में करता है। लेकिन सचमुच जो ध्यान करने वाला हो, जो मुक्ति के राह पे चले, वो अपने मन को वश में उसी तरह करता है। और वो बच्चा कहता है, अच्छा उनका नेफ्यू कहता है अच्छा ठीक है आप चलिए मैं वापस जाता हूँ, मैं भी अपने मन को वश में करता हूँ। वो जाके अपनी कुटिया में बैठ जाता है और भगवान देखते हैं कि वो बालक आ रहा है और वो उसकी कुटिया के बाहर, उनको मालूम है कि वो सारे पुस्तक आएगा और वो उनको पूछेंगे, तो उनकी कुटिया के बाहर वो पहरेदार के रूप में बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम पड़ जाता है कि अभी वो कुछ ही क्षणों में अरहंत बन जाएगा, अरहंत फल समाधि उसको प्राप्त होगी और सारे पुत्र आएगा तो उसको डिस्टर्ब करेंगे। तो इस तरह के दृष्टांत जब आप सुनते हैं तो मन में श्रद्धा आती है। आप उस बालक की पारवी देखिए, भगवान उसके पहरेदार बन रहे हैं साधना में, कोई बाधा ना आए। तो जब तक हम ताई संघ के संपर्क में नहीं थे तो इसी तरह से मन में मोद जगाते थे किस तरह से साधना करी जा सकती है, किस तरह से छोटी छोटी बातों से हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर जब हमने थेरी गाथा पढ़ी तो उसमें तो और इतने उत्तम वृतांत हैं, एक से बढ़ के एक, कुछ तो जो हृदय को छू जाते हैं वो याद रहते हैं।
जैसे एक वृतांत था कि एक थेरी अभी शायद पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी और वो एक उद्यान में जा रही थी वहाँ ध्यान करने के लिए, तो कोई मनचला उनके पीछे पड़ जाता है और उनसे कहता है कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ, आपसे शायद विवाह करना चाहता हूँ, आप इतनी सुंदर हैं, आपकी इतनी आँखें इतनी सुंदर। तो बाहर वो मनाते करती हैं, वो मानता नहीं है, तो कहती है तुम्हें क्या मुझ में सुंदरता दिख रही है। वो बताती हैं शरीर की अशुभ भावना करती हैं, लेकिन उसके कुछ समझ नहीं आता। कहता आपकी आँखें इतनी सुंदर हैं, आपकी चाल इतनी सुंदर है। तो क्योंकि वो उसकी समाधि बहुत पुष्ट थी, तो हाथ से आँख निकाल के उसको दे देती हैं, तो ले ये तो ले ले। तो इस तरह के दृष्टांत आप जब पढ़ते हैं तो मन में समझ आता है कि किस तरह से साधना की जा सकती है, किस तरह से साधना से बगैर हिले बिल्कुल उजू पटिपन्नो भगवत सावक संग। और जब से थाई के संपर्क में आए हैं तब से तो हम खुद देखते हैं, मिले हैं इनसे, इतने वरिष्ठ आचार्यों से, लुंगपुर लियम से, लुंगपुर सुमेधो से, लुंगपुर जुंडी से, लुंगपुर प्रसन्नो से, और दिल्ली भी आए हैं, यहाँ पे मिले हैं, थाईलैंड में जाके भी हम मिले हैं, देखा है उनके व्यवहार को। तो स्पष्ट लगता है कि सचमुच में जो भगवान बताते हैं कि श्रावक संग ऐसे होने चाहिए, और जो कहते हैं कि यथेदंग चत्तारि पुरुष युगानी, तो 4 तरह के युगल जो सोतापन्न सोतापत्ति मार्ग पर चलने वाले, और इसी तरह सगदागामी अनागामी तो और अरहंत, तो उन सबको देख के लगता है कि हाँ सचमुच में अभी भी इस समय भी ऐसे लोग हैं जिनमें अन्य क्षमताएँ हैं। जैसे लुंगपुर पियक को देखते हैं, जहाँ ननन को देखते हैं, तो उनकी समाधि की इतनी प्रबल उनकी समाधि है। लुंगपुर सुमेधो को देखते हैं, उनकी पन्या इतनी प्रबल है। तो विभिन्न प्रकार के किस तरह से साधना की जा सकती है, किस तरह से विभिन्न प्रकार से हम अपने मार्ग पर चल सकते हैं, जो हमको ठीक लगे चूज़ करके, तो बहुत प्रसन्नता जागती है, मन में इंस्पिरेशन जागती है। और यही संघानुसति का मुख्य उद्देश्य है। फिर आगे जो बात आती है आहुने पाहुने दक्षिणे, ये स्वतः ही जब आपके मन में श्रद्धा जागती है, इंस्पिरेशन जागती है, तो ये स्वतः ही सब लोग करते हैं। जब वो लोग आते हैं यहाँ पे, किसी को हमें कहना नहीं पड़ता कि आप उनके आदर करिए, सत्कार करिए, दे आर वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। खुद ही उनका प्रेजेंस ही हमको फोर्स करता है कि हम उनको आदर दें, सत्कार करें। और अंत में बात कही जाती है अनुत्तरंग पुण्य खेतम लोक साथ, कि इनके प्रति कोई भी सेवा का भाव करना, कोई दान देना, वो एक अद्वितीय पुण्य के क्षेत्र हैं। अर्थात उनके संपर्क में आके कोई पुण्य क्षेत्र करेंगे तो उसका अद्वितीय बहुत ही अत्यंत भारी फल मिलेगा। तो इसलिए सभी लोग हमने देखा है कैसे लोग आते हैं, पिंडपात किया तो कैसे लोग सब सुबह सुबह पहुँच गए भोजन देने के लिए। तो वो सब चीज़ें याद करते हैं तो मन में संघानुसति का भाव जागता है, मन में मोद जागता है, प्रसन्नता जागती है, इंस्पिरेशन जागती है, ताकि हम भी उनकी तरह साधना कर सकें। तो ये सब जब हम मन में इसको धीरे धीरे शांति से याद करें कुछ लंबे समय के लिए, तो सचमुच में शरीर में भी उसका प्रभाव होने लगता है। तो थोड़ी देर बैठ के एक बार इसका फिर से चिंतन करके मन में, फिर शरीर में जो मोद जागेगा उसका अनुभव करके प्रसन्नता महसूस करेंगे और फिर समापन करेंगे। जो हम रतन सूत्र की चैंटिंग करते हैं उसमें भी संघ के कई गुण हैं, क्योंकि अभी समय नहीं है ज़्यादा, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं संघानुसति के लिए। कि जैसे यथेंद खीलो पृथ्वीन सितोसिया चतुभ्यवाते ही असंपकंपियो सोपमं तस्य पुरुषं वदामि यो अर्य सच्चान अवेच पश्यति इदम विसंघे रतनम पनीतम। तो ये रंग संघ के जो रतन है, इसी तरह उसमें धम्म के भी रतन बताए गए हैं, बुद्ध के भी रतन बताए गए हैं, तो उनको भी याद करके हम संघानुसति में इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्योंकि श्रद्धा जो जागती है संघ के प्रति वो हमारे लिए एक रिफ्यूज है। पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। विषम परिस्थितियों में और साधना के लिए भी एक शरण के रूप में काम करती है, क्योंकि उस प्रसन्नता के आधार पर, उस मन के प्रफुल्लित होने के आधार पर हमारी समाधि पुष्ट होती है, स्वतः ही समाधि पुष्ट होती है, और फिर आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। तो एक बार और वो सारी चांटिंग को करके समाप्त करते हैं। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, यदिदं चत्तारि पुरुषयुगा अट्ठपुरुष पुंगला, एषु भगवतो सावक संगो, आहुनेयो पाहुने दक्षिणे करणीयो, अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकशान्ति। समापन करते हैं। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा, बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वागतो भगवता धम्मो, धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, संघं नमामि।